to the board. Now, this is about the copolymerization. What is the copolymerization? Can you tell me that what is the meaning of the copolymerization and what are the repeating units or the monomers taking part in the process of the polymerization? As the name indicates, it is the co. Matlab ki, the first thing is that two different units are participating in the Hello, process. ma'am. Huh? Sorry for disturb. Ma'am, I can record the lecture. Yeah, recording the lectures, but in the Zoom, it is facilities that only the host can record the lecture. Okay. 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 Huh. Yes. In the copolymerization, students see that here the two different monomers are participating. If they ask you the question, what is the difference between the addition polymerization or what is the difference between the all the synthetic rubbers are prepared by the process of copolymerization. Basically, in the examination, they will ask you the question of differences between the addition polymerization and copolymerization. So, can you write the basic difference between the addition polymerization and copolymerization? Yes, ma'am. What is Yes, the first difference? That the repeating unit is of the different in addition, substances. polymers. In the case of the copolymerization, two different monomers, two different repeating units, two different substances participating in the process of the polymerization. While in the case of the addition polymerization, the repeating unit is of the same substances. That is the basic difference of the addition and copolymerization. We will do the detail, but this is the first difference between the copolymerization and the addition polymerization. Now, what is the second difference did you find in the addition polymerization and copolymerization? The molecular weight is not exactly integral multiple of the original substance. So you can say that molecular weight is not integral multiple of the, that is the first thing. That is not the exactly integral multiple of the original substance taking part in the process of the polymerization. Or please tell me what are the other things you find that no evaluation of water and hydrochloric acid etc. कुछ भी evaluation नहीं होगा. Now I will take the example of the copolymerization. So the third thing is that no evaluation of water, hydrochloric acid, etc. Okay? Now, have you heard the name of the Buna S and Buna N? Yes. yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. Please tell me what is the meaning of the Bu stands for what, Na stands for what, and S stands for what? What is the three things? Yes, Bu. Bu matlab Butadiene. Butadiene. which one? 1,3-butadiene. 1,3-but. Yes. The first thing is that म्यूट करो म्यूट किसका चल रहा है the Bu stands for 1,3. Now, what is the meaning of the Na? Means the natrium or sodium, which is used as a catalyst. So, the catalyst which is used in the preparation of Buna S is the natrium. N is standing for the natrium, or you can say that sodium, which is used as a catalyst. You can also write it as the sodium, which will be used as a catalyst. Clear?
What is the S stands for? Styrene. 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 Yes. So, bachcho, have you understand the meaning of the Buna S is the copolymer which is prepared by the two different units of the 1,3-butadiene and the styrene copolymerizes to form a copolymer polybutadiene copolystyrene. The example is very good for the copolymerization. You can give the another example for the copolymerization process is the Buna S, Buna N, all are the copolymer or they are used in the preparation of the copolymerization process and they all are the synthetic rubber prepared in the laboratory. So Buna S हो, Buna N हो, silicon rubber हो, ये सभी जो rubber है, they all are prepared in the laboratory. So we can see that they will be categorized under the category of the what synthetic rubber. So student understand what is the copolymerization? It is the process in which the two different units or the two different substances participating in the process of the polymerization. The second thing is that no evaluation of the water, hydrochloric acid, etc. The molecular weight of the copolymer is not exactly integral multiple of the original substance. And the last thing you can write about that they are the used in the preparation of the which one synthetic rubber. Synthetic. Yes, all synthetic rubber are prepared by the process of the copolymerization. The addition polymerization used for the thermoplastics and the condensation polymerization used for the preparation of the what thermosetting plastic. So this is the basic thing that you have to remember. After the completion of addition polymerization, copolymerization and the condensation polymerization, I will give you the 3 columns. In that, you will come to know about that. Now, shall I write the reaction? Bacho, the copolymer, first I am taking, this is the reaction that will be asked in your examination. As the name indicate about that, it is the Buna S. Now, please write down the molecular formula of the, suppose if I'm taking the n units of Bolo formula, see, what shall I write here? CH2 Double bond CH. Double bond. Double bond CH. yes, CH. Single bond CH. Single bond CH. Double Double bond bond CH. CH2. Bond CH2. is it right? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Okay, so you have taken the n molecules of the 1,3-butadiene. थोड़ा handwriting ऐसा ही आएगा, but I think you are able to understand. Yes, ma'am. हाँ, तो we have taken n units of the 1 position पे and 3 positions पे आपका double bond है. So we call it as the 1,3-butadiene copolymerizes by with help of styrene C6H5CH double bond थोड़ा नीचे हो गया, ये CH2 रहेगा, ठीक है. You can take M molecules. ठीक है. What is this? It is the styrene. Can you tell me what will be the compound? N units of the 1,3-butadiene copolymerizes with the M units of the styrene. The compound formed is the copolymer. The double bond is converted. अभी ऐसा compound बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH CH2
अब क्या लिखूं? यहाँ पे आपको, हाँ, यहाँ पे आपको CH, CH2, स्लाइड में बता दूंगी मैं आपको, बट दिस इज द N units and this is the M units. इसको बोलते हैं polybutadiene copolystyrene, or you can say that is the Buna S rubber. So this is about the copolymerization process in which the repeating units of the different substances participating, in which the no evaluation of water, hydrochloric acid, etc. Basically, it is used in the preparation of the synthetic rubber. बच्चों, have you understood or not? How these two compounds are connected? हम जुड़े कैसे ये दोनों कंपाउंड? ये यहाँ से जुड़े बेटा, यहाँ से ये मेरा ऐसे। अच्छा, ओके। हाँ, ठीक है, ओके। तो मैं आपको भी स्लाइड्स पे भी बता देती हूँ यही वाली चीज। स्क्रीन इज विजिबल बच्चों? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. देखो, आपको मैंने बताया था एडिशन, पॉलीमराइजेशन और कोपॉलीमराइजेशन में भी एग्जाम डिफरेंस पूछ सकते हैं। They can ask you the differences between the addition polymerization and condensation polymerization or addition and copolymerization. तो कोई भी जो है डिफरेंस पूछेंगे, और मालूम है the weightage of this question is of the 5 marks. तो आपको जो भी आप पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करेंगे that we have to do properly. को कहाँ गया कोपॉलीमराइजेशन? ये, हाँ। तो अभी आपको मैंने बताया इट इज द जॉइंट पॉलीमराइजेशन इन विच द रिपीटिंग यूनिट्स आर ऑफ Two or more different monomers. वेरी गुड, Different monomers. वेरी गुड। एंड उनकी जो प्रॉपर्टीज, Molecular weight. हाँ हाँ, Molecular मॉलिक्यूलर, weight हाँ, वो भी उनका जो होता है not- नॉट एग्जैक्टली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस, एंड दे आर हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ, अभी प्रॉपर्टीज में अपन बाद में करेंगे, बट दे आर हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डनेस, स्ट्रेंथ, एक्सेट्रा। और मैंने आपको अभी बताया 1,3-butadiene plus styrene polymerizes to form this polybutadiene copolystyrene, that is also called as the styrene rubber, that is also called as the Buna S rubber. Have you any problem? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. So everybody has understood about the addition polymerization. कहाँ पे use होता है addition polymerization? Thermoplastic. Thermoplastic. Yes, and co-polymerization where it is used? Synthetic Rubber. Yes, Synthetic rubber. हाँ, and then last अपन करने वाले हैं condensation polymerization where it is used? Thermosetting. Yes, very good, very good. तो now next जो है हम condensation polymerization करेंगे। भैया म्यूट करके रखिएगा प्लीज, आई नीड नॉट टू टेल यू एवरी टाइम। तो अभी आप बोर्ड पे आ जाते हैं अपन, और अपन करेंगे व्हाट अबाउट द condensation polymerization. So your third type of the polymerization is the condensation polymerization. ठीक है। Now, what is the first thing you will find for the condensation polymerization? The monomers are of the different types. very good. Different functional group. Yes, different substances. पहली बात, different substances of the monomers, or Evolution of water. very nice, very good.
there will be a evaluation of water. और बोलो. The arrangement of the condensation polymer is like this. Like that. They are, अभी आपने एडिशन पॉलीमराइजेशन में देखा था, how they were arranged? Linearly. Linear. Chain. Extremely nice. I'm very happy to see the students. You are replying. I'm happy that in the addition polymerization, they were arranged in the form of the long chain linear polymer, while in the case of the condensation polymerization, they are arranged in the form of this, like this. और एक M लग जाएगा इधर, like इधर ऐसे. So they are arranged in the form of the three-dimensional cross network structure. बच्चों समझा आपको? ये ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, है ना? हाँ. So this is the, इनको बोलते हैं अपन क्रॉस नेटवर्क स्ट्रक्चर. क्रॉस ब्रांच्ड लिख देंगे, ब्रांच नेटवर्क स्ट्रक्चर. ठीक है. नेक्स्ट और क्या है? Ma'am, the molecular weight is not an integer. Yes, or molecular weight is not exactly integral multiple of the original substances. Any more changes? Things. जल्दी. Where they are. और क्या आपने देखा? Thermosetting. Very good. They are used in the preparation of the thermosetting plastic. Now, one more important thing is there. वो मैं आपको बताती हूँ. They are used. That is a good point. That they are used in the thermosetting. अब बताओ और क्या है? जितने भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो कंपाउंड्स पार्टिसिपेट करेंगे, they must have the polar group. C double bond O. All the compounds participating in the process of the condensation polymerization have the functional group in which the polarity or C double bond O should be there. Everybody got it or not? सबसे पहली बात, different substances, monomer units are of the different substances. There is a evaluation of water, hydrochloric acid, etc. They are present in the form of the cross-branched three-dimensional network structure. All the participate group which are participating in the process of the condensation polymerization must have the C double bond O. उसको बोलते हैं हम polar group should be there. They are used in the preparation of the thermosetting plastic. बच्चों ये बातें समझ में आई या नहीं आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और एक बार एक्सप्लेन कीजिए. और बता दूं, बिल्कुल बता देती हूँ. सबसे पहली बात अपन एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ. नाइलॉन 6,6. हैव यू रिमेम्बर नाइलॉन? आपको 11th में भी था ना? यस मैम. Yes. हाँ, तो बताएंगे अपन नाइलॉन 6,6 में हु आर द पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स? Adipic acid. Hexamethylene diamine. Ethylene diamine. वेरी गुड. And adipic acid. हाँ, एडिपिक एसिड में कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे? 2, 3, 4, कुछ तो होगा. 4. 2, ma'am. 2. 3. Ma'am, repeat question. मैं बोल रही हूँ ना, अभी मैं इसको रब कर दूं. अभी अपन करेंगे. हाँ. बोलो. एक बोला है हेक्सामिथिलीन डाइअमीन, राइट? तो हेक्सा मतलब 6 कार्बन हाइड्रोकार्बन. ठीक है, ऐसा लिखना आपको थोड़ा अच्छा समझेगा. ठीक है,
अपन इसको लिख देते हैं, कितना लिखूं? 6. 6. 6, ठीक है। और क्या बोला आपने? डाइअमीन, है ना? Am I Yes, right? ma'am. NH2. NH2. NH2, right? Yes. हाँ। ठीक है, दिस इज योर हेक्सा मिथाइलिन, मतलब 6 मिथाइलिन ग्रुप है और 2 अमीनो ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? हेक्सा मिथिलिन डाइअमीन। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज हेक्सा मिथिलिन डाइअमीन। लिख लेंगे आप, है ना? और है एडिपिक एसिड। अब बोलो, OH C डबल बॉन्ड लिखो। Yes, miss. Yes, ma'am. Yes, yes. हाँ, और यहाँ पे क्या लिखूं? CH2 4 times. 4 times. हाँ, 4 टाइम आपको मिथिलिन लिखना है, ना कि कार्बोक्सिलिक। हाँ। बच्चा, आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, यहाँ ma'am. पे भी ma'am. आप ओ आएगा। अरे बाप रे, आप समझ जाएंगे ना, ये नहीं दिखता है इसलिए। Yes. हाँ, अब ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होगा? Elimination of H2O. वाटर। Elimination of H2O. हाँ, तो इसका H और इसका OH, इसका H और चला जाएगा और इसका भी OH चला जाएगा। अंडरस्टैंड? Yes. ये सब N यूनिट्स है, सो यू हैव टू रिमेम्बर। तो अब जो कंपाउंड रहेगा उसके पास में कौन सी लिंकेज बचेगी? अब क्या लिखूं मैं? H N, ये H चला गया इसका, तो ये H, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूं? सेम CH, सिक्स। यहाँ पे क्या लिखूं बच्चों? NH, यहाँ पे क्या डालू? C double bond O. C double bond. हाँ, समझ में आ गया आपको ये सब? अब क्या डालू ब्रैकेट में? CH2 4 times. H2 4 times. हाँ, गुड 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 गुड। यहाँ पे भी H 4 और यहाँ पे C double bond. C double bond. यस। This is your nylon 6,6, or you can say that it is the condensation polymer, जिसे बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे? Nylon 6,6, which is prepared by the condensation polymerization of the adipic acid and hexamethylene diamine। बच्चों, आपको समझा कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें आपको क्या क्या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में रिपीट करो। द रिपीटिंग यूनिट्स आर ऑफ द Different monomers. Different substances. सेकंड पार्ट क्या लिखेंगे? दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ Cross branched network structure. Cross link. यस। और क्या? देयर इज अ इवैल्यूएशन ऑफ Water molecules. yes, all the compounds which are participating in the process of the condensation polymerization should have Polar group. Polar groups. C They double are- bond. yes, they are used in the preparation of Thermosetting plastic. Thermosetting very good। Thermosetting. हाँ, अब आपको मालूम है आपने 2 क्वेश्चन रेडी किए। कौन से? आपने एक तो किया है
डिफरेंशिएशन बिटवीन द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन, और दूसरा क्वेश्चन आपने रेडी किया है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो पहला अपन करेंगे, स्लाइड्स में जाते हैं और देखते हैं, उसमें देखेंगे आपको, यू विल कम टू नो दैट यू हैव प्रिपेयर्ड द 2 क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन आने ही वाला है। तो विल गो देयर। हाँ, this is the differences between the addition polymerization and the condensation polymerization। ठीक है, तो पहला अपन ने क्या किया कि जो मोनोमर्स होंगे दे आर ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स, या एक ही कंपाउंड के पार्टिसिपेट करेंगे इन द केस ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, while in the case of the condensation polymerization the different units will be participating। उसके बाद में नो फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इनके खाली डबल और सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होते हैं इन द केस ऑफ द एडिशन पॉलीमराइजेशन, while in the case of the condensation polymerization the compound participating they must have the functional group in which the polar group C double bond O should be there। The molecular weight is not exactly integral multiple of the original substance in case of the condensation polymerization, while in the case of the addition polymerization the molecular weight is exactly integral multiple। The molecular weight of the polymer, मतलब अब एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या है कि एक बार कंपाउंड बन गया तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन इन केस ऑफ द पॉलीमर इफ इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन तो उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कीप ऑन इंक्रीजिंग आल्सो। देन देयर इज नो इवैल्यूएशन ऑफ वाटर इन केस ऑफ द एडिशन पॉलीमराइजेशन। In the case of the condensation polymerization, there is a evaluation of water. They are present in the form of long chain, cross branched 3-dimensional network structure, while in the case of addition polymerization, they are present in the form of the long chain polymer. They are used in the preparation of thermoplastic. They are used in the preparation of the thermosetting plastic. So, bachcho, have you understand the differences between the addition polymerization and the condensation polymerization? Or do you find any problem in the polymerization process? They are of the 3 types: addition, co and condensation. तो मुझे बता दीजिए, otherwise we'll go for the thermoplastics and thermosetting plastics। No doubt, ma'am. Any doubt? Any doubt, bachcho? No, ma'am. No, ma'am. हाँ, No, so ma'am. are you able to write any question of the 5 marks if it comes? Differentiate between the addition polymerization। और बच्चों, one thing is that always you write the examples when you are differentiating between the addition polymerization or condensation polymerization या co-polymerization and condensation, whenever you are writing any differences between the types of the polymerization, तो आप examples जरूर mention करिएगा। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन का आप एग्जांपल देंगे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथिलीन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, while in the case of the condensation polymerization you can give the examples of bakelite, urea formaldehyde, nylon 66। they are the very good examples that you can mention about the condensation polymerization। So these are the basic differences you have to mention, and if the question is of 3 marks, at least 6 differences you should write. If the question is of the 4 marks, you should write the 4 differences। So see that I should write on the whiteboard also। म्यूट करो, किसका चल रहा है? Yes। The students, if the question is of the 3 marks, तो differences कितने लिखने हैं? 6 points। If the question is of the 2 marks, then you write only 4 points। Always mention the examples that will carry around half to 1 mark, depend upon the weightage of the question which will be given to you in the examination। So have you understood about that? अगर question paper carry करता है 3 marks, तो 6 points। If it is of the 2 marks, तो 4 points।
and you have to mention the examples for the types of polymerization. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Okay. Now we will go for the thermoplastic and thermosetting plastic. Very important. हाँ बोलो। Maximum for how many marks it will come? हाँ, अगर क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स का आता है तो वो आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर 2 मार्क्स का आता है तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। और कभी कभी वो डिपेंड करता है, 3 से ज्यादा नहीं देते हैं डिफरेंसेस बिटवीन दैट। जनरली अब तक का ट्रेंड है, तो जितने आप पॉइंट्स आपको याद है यू कैन राइट, बट जनरली 6 पॉइंट्स है तो दे असाइन हाफ मार्क फॉर द एवरी पॉइंट, तो उसका वेटेज हो जाता है 3 मार्क्स। 4 पॉइंट होता है तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। नाउ शैल आई राइट थर्मोप्लास्टिक्स। Yes, what is a thermoplastics? Very important thing. म्यूट करो भाई, किसका चालू है? What is the thermoplastic? Thermoplastic are the polymers which can be molten on heating under pressure and can Yeah. be recycled. Yes, very good. और yes, और क्या है? Thermoplastics they are prepared by Addition Prepared polymers. by additional Addition polymers. polymer. they are present in the form of Long chain like Linear. they become, अगर आपको मैं पॉली बैग देती हूँ अपने घर का, ठीक है, तो आप उसको गर्म करो तो क्या होगा? इफ आई एम गिविंग यू अ पॉली बैग, ठीक है, तो नाउ यू जस्ट सी द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन दैट, व्हाट हैपन? Melt. जल्दी जल्दी Main. और मेल्ट होगा, या मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो सॉफ्ट ऑन Heating. Heating. एंड हार्ड ऑन Cooling. Cooling. गुड। फर्स्ट थिंग, तो पहली पॉइंट अपन लिखते हैं थर्मोप्लास्टिक का। म्यूट करो भाई, किसका चालू है? फर्स्ट थिंग इज दैट रिपीटिंग यूनिट इज ऑफ द सेम सब्सटेंस। Repeating unit is of the same substance. ठीक है, same substance. Second point, they are prepared by the addition polymerization. Thing is that they are present in the form of the long chain polymer. Effect of heat. Ma'am, हाँ, you can repeat once again. My network issue was happening. पहले किसका ये चल रहा है? पहले उसको म्यूट करो भाई, मेरा बहुत हाँ, छोड़ के। ग्रुप में डालो आप। हाँ, मैं वापस अब रिपीट करती हूँ बच्चों। सबसे पहली बात, द रिपीटिंग यूनिट which are participating in the process of the polymerization in case of the thermoplastic is of the same substance. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is prepared by the Sure. addition polymerization process. It is present in the form of the long chain linear polymer. It is present in the form of the long chain linear polymer. Effect of heat, soft on heating and hard on cooling. क्या लिखेंगे अपन? Soft, it becomes soft on Soft on heating. heating and rigid or hard. Hard on cooling. Yes. आपने देखा है ना, पॉली बैग को गर्म करो तो एकदम थोड़ा सा ये हो जाएगा, और जैसे ही ठंडा होगा तो that will become the rigid. So that is a very important property of the thermoplastic, that they become soft on heating and hard on cooling. Everybody has got it?
Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. 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 हाँ, अब थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं, आप मैं आप पॉलीबैग को आपको दूं, आप एसिड में डिसॉल्व करो, एसिड में डालो, तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होगा। या हाँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होगा, बट इट इज अफेक्टेड और नॉट, मतलब उसका कुछ तो रिएक्शन होगा। इट इज अफेक्टेड बाय एसिड्स और alkalis, or it is not affected by the acids or alkalis? I'm little bit affected. Yes, it is affected by the acids and alkalis, and it is और कितना डालेंगे इसमें? हाँ, ये हो गया। No polar group is required in case of the thermoplastics, and they are, example बताइए। Polythene, Polythene. Acrylic, polyester, हाँ, very good, very good, very good। nylon, Teflon. हाँ, नायलॉन तो इसका है बाबा, थर्मोसेटिंग का। जितने भी एडिशन Yes, पॉलीमराइजेशन है, तो आप उसका दूसरा नाम सोचो, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो ये कहाँ पे काम आता है? थर्मोप्लास्टिक। जहां पे रबर आ गया तो कोपॉलीमराइजेशन, जहां पे नायलॉन 6 आ गया तो आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एक के अंदर पानी निकलता है, एक में पानी नहीं निकलता है। तो ये लाइक दैट, आप थोड़ा सा कैसे भी फॉर्म में आपको जैसे याद रहता है वैसे रहो। आई हैव tried my level best to teach you that the basic differences between the thermoplastic and thermosetting is that one is prepared by the repeating unities of the same substance, the repeating unities of the different substance. It is prepared by the अब मैं thermosetting ले लूं, फिर अपन स्लाइड में डिफरेंशिएशन करेंगे, कंडेंसेशन। Now I will not repeat the things. You people have to tell me the differences between the condensation मतलब कि thermosetting plastic. इट इज प्रिपेयर्ड, थर्मोसेटिंग जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं आपके घर में, मेलामाइन आप यूज करते हैं, आप स्विच बोर्ड यूज करते हैं, ये क्या है? दे ऑल आर प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, एंड दे ऑल आर द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। दे आर प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और बताओ। different monomers. सेम, Two different monomers. Cross link chain. वेरी गुड, डिफरेंट मोनोमर। अरे वाह, नाइस नाइस Two नाइस, different functional groups. यस। अच्छा, Evolution of water. यस Heterochain polymer. यस, गुड, वेरी गुड। अच्छा, और एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं आपका स्विच बोर्ड है, इफ आई एम गिविंग यू एंड आई एम टेलिंग यू कि इसको गर्म करो, तो क्या बोलेंगे आप? व्हाट विल बी द इफेक्ट? सॉफ्ट होएगा। नहीं नहीं, It won't get melted. यस, व्हाई? High molecular mass, strong forces. या दैट इज देयर, एंड द थिंग इज दैट मैम वो ऐसा नॉर्मली तो होता है ना, नहीं, वो बहुत ज्यादा आप जब डालेंगे, जो आप बैकेलाइट ले लो या फिर आपका स्विच बोर्ड ले लो, तो जनरली इन केस ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक they acquire their three-dimensional cross network structure only in the heating condition. वो उनका जो स्ट्रक्चर जो बनता है क्रॉस नेटवर्क स्ट्रक्चर, they acquire that only in the heating condition. So there will be not effect of the heat on that. So the thing is that you have to write that the thermosetting plastic acquire, that is the basic difference between them. So what you have to write? Acquire, they acquire their, ये आपको स्लाइड में सब मिलेगा, दे एक्वायर थ्री-डायमेंशनल क्रॉस नेटवर्क स्ट्रक्चर ओनली इन द हीटिंग कंडीशन। So in case of the thermoplastic, they become soft on heating and hard on cooling, while in case of the thermosetting plastic, why they are not affected by it? Because they acquire there, उनका जो network बनता है structure का, cross branch network structure, they acquire that only in the heating conditions. So
That is the basic difference between the thermoplastic and thermosetting plastic. The basic difference between thermoplastic and thermosetting is that one is prepared by addition, one is prepared by condensation. One is having the same repeating unit, one is having the different monomer unit. One is having the evaluation of water, one is having no evaluation of water. One is having the homopolymer, one is having the heteropolymer. Then the sixth very important point is that they are acquiring their three-dimensional cross-network structure only in the heating condition, while in case of the thermoplastics, they become soft on heating and hard on the cooling. Or you can say that they become rigid on the cooling. So that is the differences between the thermoplastic and thermosetting plastic. जितने भी thermosetting plastics होते हैं, you can give the example, बताओ. Nylon 66, phenol formaldehyde, Bakelite. Bakelite. Ah, Urea formaldehyde. urea formaldehyde. Very good. Formaldehyde. Phenol Melanine. formaldehyde. Very nice, very nice. So you can write like, so shall I go for the slide so you can come to know about that also. Miss, ये reuse भी नहीं होते ना? नहीं होते. Very good. That is also example. Very good differences. They can be reclaimed, they can be reused. कौन से? Addition वाले. Thermoplastic, but thermosetting plastic, they cannot be reused, reclaimed, etc. थर्मोप्लास्टिक्स में आएंगे हम. और अरेंजमेंट भी बताया ना, दे आर अरेंज इन द लॉन्ग चेन लीनियर पॉलीमर while they are arranged in the form of the Bakelite. कैसे रहता है ऐसा? cross branch 3-dimensional network structure, while case of the polyethylene, polyvinyl chloride, polystyrene, they all are present in the form of the long chain linear polymer. Understood? Yes. Yes, ma'am. डिफरेंस में लिंकेज भी आएगा ना? क्या बोलो? क्या बोल रहे हो? बोलो जल्दी. डिफरेंस में हम लिंकेज हाँ, यस. तो ये देखिएगा आप, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, इनका, हाँ ये देखो डिफरेंसेस. आपको मैं शीट दूंगी एंड यू कैन, अगर नहीं भी याद है तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी यू कैन लिख रहे. सबसे पहले दे आर प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन, पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन, लॉन्ग चेन पॉलीमर, 3-dimensional क्रॉस नेटवर्क स्ट्रक्चर. अच्छा, फोर्सेस का भी डालना है. दे आर प्रेजेंट इन द they are linked together by the weak van der Waals forces, but they are linked by the strong covalent forces. A very high amount of energy is required to break that bond, because the thermosetting plastic hard होते हैं, strong होते हैं, brittle होते हैं, while आपने पॉली बैग ले लो तो कैसा रहता है? सॉफ्ट होता है. और वो brittle नहीं रहेगा, टूटेगा नहीं, वो खाली मुड़ जाएगा, ऐसा वीक हो जाएगा, but that will not be brittle. लेकिन आप एक मेलामाइन की प्लेट को फेंकोगे जोर से तो दैट विल बी ब्रोकन. सो दैट मींस दैट इज हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रिटल. अंडरस्टूड? Yes, miss. Yes, ma'am. अगर आप मेलामाइन की प्लेट फेंक दो तो दैट विल बी ब्रोकन डाउन, बट आप एक पॉली बैग या कोई फेंकोगे तो वो टूटेगा नहीं. आपका पॉलीथीन का बैग लेके मिलो तो वो क्या टूटेगा क्या? नो, बिकॉज दैट इज द सॉफ्ट होता है, लेस ब्रिटल होता है, एंड that is more ductile. Ductility is more in case of the thermoplastic as compared to the thermosetting plastic. Thermoplastics become softened on heating, harden on cooling. They do not soft. Remold कर सकते हो, reuse कर सकते हो, reclaimed कर सकते हो in case of the thermoplastic, but that cannot be done in the case of the thermosetting plastic. Thermosetting plastic, once it is formed, cannot be remold, reused, reclaimed. That is soluble in the organic solvent. It is not soluble in the organic solvents, and molecular weight is also low in case of the thermoplastics, and it is very high in case of the thermosetting plastics. So students, understand the types of the polymerization and the differentiation between the thermoplastics and thermosetting plastic. Everybody's got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So here 2 questions are ready. They can ask you the differences between the thermoplastic and thermosetting plastic. They can ask you the question, the differentiation between the addition polymerization and condensation polymerization.
They can ask the differences between the addition and condensation polymerization or copolymerization and condensation polymerization. The difference between the thermoplastics and thermosetting plastics is a very common question, and 3 marks questions generally they ask the same thing. If the question is of the 3 marks, at least you have to mention 6 points for the thermoplastics and thermosetting plastics, then only you will get the marks for that. हेलो मैम, बोलो वो एग्जाम में मतलब ये सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज लगा था। किसका? ये मैं आपको जो जो क्वेश्चंस बता रही हूँ ना वो आप लिखते जाइएगा, because no other question whatever I am telling you will ask you in the examination. जो हम कर रहे हैं वो ही आएगा एग्जाम में, no other than that, because the syllabus is very limited and it is compact. So we have to take that thing, that what are the things which are required from the examination, and whatever I'm teaching, that is everything is from the examination point of view only. So next thing which we are going to in next lecture, आपका कब है? Thursday. एक मिनट, come to the whiteboard. हाँ, the next मैं आपको कराने वाली हूँ, which you have to study about that, compounding of plastic. Compounding, or you can say that the ingredients of the plastic, पढ़ के आएंगे, we'll do that. Question को दोनों फॉर्म में पूछ सकते हैं. They can ask you 6 marks question, what is the compounding of plastic? They can also ask you the question, what are the ingredients which are used in the preparation of the plastics? So that we will do in the next lecture. कि क्या क्या आप जैसे आपने सब्जी बनाई उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डालते हो, the same thing. जब प्लास्टिक बनता है तो आप रॉ मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या करते हैं? आपको प्लास्टिक, you want to prepare, you want to manufacture the plastic, what are the raw materials? Compounding मतलब कि raw materials. जैसे सब्जी में आप डालते हो salt, chili, like that. What are the things you will gather for the preparation of the plastic? मोनोमर। नहीं, वो मोनोमर क्या है? मोनोमर क्या है? Resin. रेजिन, राइट. और वेरी गुड, रेजिन. हाँ, रेजिन. और क्या लेंगे आप? डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करते हैं प्लास्टिक का, कोई रेड कलर, कोई ब्लू कलर, कोई ब्लैक कलर, तो कलरिंग मैटर. और कैटलिस्ट विच आर यूज फॉर द एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन, दोनों में यूज होता है. और क्या यूज करेंगे? Crude oil. हाँ, ऑयल मतलब लुब्रिकेंट्स है ना. वी यूज लुब्रिकेंट्स, वी यूज एंटीऑक्सीडेंट्स, वी यूज फिलर्स, वी यूज क्या बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, वी यूज थर्मल स्टेबलाइजर्स. नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी. तो दे ऑल आर यूजेस इन द कंपाउंडिंग ऑफ द प्लास्टिक. वो आई एम गिविंग द स्ट्रेस बिकॉज द क्वेश्चन इज ऑफ 6 मार्क्स. या तो फुल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे, या दे विल आस्क यू कि राइट द फंक्शंस, properties and uses of resin and fillers. Yeah, they can ask you the question, what is the role of the filler in the preparation of the plastic? What is the role of the thermal stabilizers in the preparation of the plastic? ऐसे 2 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. They can ask you the 6 marks question, depend upon the examiner's wish how he is asking you. Whatever. One more thing I just want to tell you that from this year onwards, the weightage of MCQ is comparatively less. PDF पे ज्यादा जोर दिया है. So we have to do more PDF questions, मतलब कि descriptive, theoretical questions. ठीक है? So we should do like that. Whatever the things we have done today, is it clear, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चैट बॉक्स में क्या क्या डाला है? Not seen. मैंने बोला बच्चों, आई एम गोइंग टू शेयर यू ईच एंड एवरीथिंग इन योर गूगल क्लासरूम. वेट फॉर 2 to 3 days. Once the Google Classroom is created, everything will be shared in your Google Classroom. I will share the Gen and Gen ebook also. I will share the notes. I will share the
PPTs also. So you need not to worry, wait for 2 to 3 days. First unit test will be held after the completion of the क्या बोलते हैं 40% syllabus. मतलब कि at least 2 topics depend upon the weightage. Once if it is completed, then we will conduct. Gmail will be given to you by the college. College will SIGC edu आपको provide करेंगे, in which they will provide you the mail ID, official mail ID. आपको हर जगह वो ही use करना है. You have to join through that only. Okay? Any doubt? Okay, Miss FC मतलब Okay, क्या? ma'am. FC सबमिट करने का है। कौन सा FC? ओ ग्रुप पे आया मिस। Which group? FC? मुझे नहीं पता, यहाँ लिखो क्या आया हम आपका ग्रुप में message? मतलब FC एक्नॉलेज फॉर्म वो सबमिट करने का ऑनलाइन। वो आपका ऑफिस होगा, ऑफिस का है काम, ऑफिस का रहेगा आपका कोई डॉक्यूमेंट, डाक या नॉट एकेडमिक रिलेटेड है, प्लीज नॉट एकेडमिक रिलेटेड। आप ऑफिस पीपल से कांटेक्ट, दे विल ऑन थर्सडे प्रैक्टिकल लेक्चर देयर इज अ केमिस्ट्री, वो देखते हैं तभी थर्सडे को है, तो एज पर दैट वी विल कंडक्ट या फिर वर्चुअल लैब आई एम गोइंग टू सेट अप नॉट फॉर दिस वीक, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, बट मैं बताऊंगी आपको क्या करना है फॉर दिस। ओके, टोटल 6 चैप्टर एक सेमेस्टर में है, सेकेंड सेमेस्टर इज द डिफरेंट, not for this semester. Semester 1 syllabus is different, semester 2 syllabus is different. Right now we are doing only semester 1 syllabus, right? Because the subjects are also different for the semester 1 and semester 2. So you do not discuss about that semester 2, only semester 1. Okay, shall we leave? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.